Okay, good morning, dear students. Hope you are enjoying your study by maintaining proper guidelines for the COVID-19. Okay? Yes. So, we are doing our 8th topic of class 6 science, body movements. और अब तक बच्चों क्या है, 2 class, you can say lectures we have along with the skeleton itself. जिसे आप कंकाल बोलते हैं हिंदी के अंदर. And in that we have tried to understand how many bones, types of bone, what they form in particular, and what is their specific function or purpose in our body, and how, what your movements are there in your body. Movements, okay, movements are of 2 types. कौन सी? Movement in which a part of your body moves, and a movement where the whole body moves. And that whole body movement is known as what? When you are running, you are playing and all that, that is known as locomotion. And we have also studied that there are 206 bones in an adult human being. बड़े इंसान के अंदर 206, 206. And at the time of birth, that is quite high. 100 plus कर दीजिए आप, 100 plus, more than that even. Acceptable figure is 312. Okay, then what is skeleton? Skeleton is the bony structure present inside your body. Present inside your body. And it is of 2 types, exo and endo. When it is inside, as like in human being, it is known as endoskeleton, and when the skeleton is present outside the body, it is known as the exoskeleton. Then okay, we have studied about the details, how many bones, 22 plates, almost joints together, making the skull, and out of which 8 are making the brain box. Okay, then it protects what? Vital organs like brain, and it also protects your 3 sense organs like ear, eyes, nose, and ear, eyes, nose. Okay, 3 plus brain. Then we have studied about the backbone. Backbone, it is also known as vertebral column, tubular type system having a hole in that. It is made up of 33 bones. In between the 2 bones vertebrae, there is a disc which protects it from wear and tear and makes it bit flexible so that we can move our body, bend ourselves and like that. ठीक है? And the main क्या है? बैकबोन का फंक्शन क्या है? अपर पार्ट में इसके क्या है बच्चों? आपके नेक नीचे जो है हिप बोन्स हैं, और साइड में आपके शोल्डर्स है, नेक के बाद शोल्डर जुड़ा है. दैट मीन्स इट गिव्स मेन सपोर्ट टू योर बॉडी, एंड स्पाइनल कॉर्ड runs through it, which is the main nerve of the nervous system. Then rib cage we have studied. Okay, 12 pairs, 22 I am confusing with the skull again. Okay, 12 pairs. ठीक है? From the back they are attached with the vertebral column. In the front 8 bones are attached to the breastbones, and 2 are just hanging. Okay, and what they are also protecting your 2 vital organs. 2 vital organs, lungs and heart. Then we have studied about shoulder and hip bone. Shoulder bones, clavicle, scapula, then and the upper part having a ball and socket joint where your this humerus attaches. Then arms are attached at the shoulder bones, and your legs are attached with the hip bone. Okay. Then we have talked about the hip bone also. Hip bone makes a what we say basin-like structure, जिससे आप क्या है, you can sit properly with that. Okay, and it is attached at the end of your backbone or the vertebral column. Then we have studied about the bones in hand and foot. क्या है बच्चों? 27 bone in hand. What? Hey, please go. Pigeon. Okay, let's study. 27 bones. Wrist contains 8. Carpals, metacarpals 5, then phalanges. 3 each in fingers and 2 in thumb. Likewise, your foot bone 26 in number. Here, that way जो आपका क्या है, ankle, जो टखना है, टखने के अंदर ऐसा एक our wrist
जो रिस्ट है बच्चों, एज लाइक योर एंकल, इट कंटेन 7, बट ये जो बोन्स होती हैं दे आर मच बिगर इन साइज देन द wrist bones because they are holding the whole weight of your body. प्रेशर पड़ता है उसके, इनकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, इट इज बिट डिफरेंट. व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस यू विल स्टडी so many types of 3-4 types of joints are also there. ठीक है. So but for you for 6th class it is more than sufficient. Yes, as like hand, foot is also having here, there we call carpals, here we call them tarsals, metatarsals, and again phalanges. 27, 26. Then we have studied about the cartilage. Cartilage, yes, it is also a hard structure present in our human beings, but it is not as hard as bones, and it is flexible. It is flexible. It is present in the external pinna, tip of the nose, and also at all the joints, plus in the two vertebra column where 2 vertebrae are there. That means 33. कितने हो गए बच्चों? 30, at least 32 discs will be there, cartilage discs. What they do? They protect it from wear and tear and friction. Up to this we have studied. Then we have just started joints. What is a joint? ये हमने कल किया था. A place where 2 or more than 2 bones meet in the skeleton. Okay, that is known as a joint. But why there is need of joint? Why? अब क्या है बच्चों? Suppose there is no joint in our body. जो joint तो नहीं कहेंगे हम, there are no joints in our body. What will happen? Suppose if I am standing before you and I am made up of a single bone having all different compartments, rib cage, skull, this and that, but it is a single bone. What will happen? My position will not be much different than a statue. उसको हम क्या बोलते हैं? मैनीक्विन बोलते हैं. What we call it? a मैनीक्विन. यानी मेरी पोजीशन मैनीक्विन से ज्यादा अलग नहीं होगी. जो खड़ा है कपड़े तो डाल सकते हो एक शोरूम के बाहर, but it doesn't move, it doesn't talk, it doesn't show any locomotion, movements, body parts and all that. So God has given different type of joints so that a human body or other animal's body can show movements in the body parts and do the different activities. So wherever 2 or more bones are meeting, there is a joint. And these bones are what? They are attached with each other at the point of joints with the help of what? Ligaments. With the help of what? Ligaments. Plus, sorry बच्चों, कल हमने ये भी किया था, our shoulder and hip bones, they are the main places where muscles are attached. और ये जो muscles होते हैं बच्चों, they are attached with the bone with the help of tendons. Bones ये जो hang करती हैं joints के ऊपर एक दूसरे के साथ, वो क्या है बच्चों? Ligament. I might have written somewhere. Yes. Not written? Yes, here. I must forgot to write. These are tendons. Okay. Here, like this, there will be ligaments. Those hold, or you can say attach one bone with the another bone. Okay. That means, and moreover, not only tendons, ligaments are there, cartilage is also present in between the 2 bones where joint is there. Plus, a fluid is there, which helps proper movement of the bones in the joints, and also this presence of cartilage and that oil or fluid, it protects the bone from normal wear and tear when there is a movement between the joints. Now coming to the
types of joint. How many types of joints are there? Hinge joint. उससे पहले कि हम हिंज ज्वाइंट पे आए, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा. तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया. What I will be, my position is not different than a statue in a standing outside a showroom or a we call it a mannequin. Okay, suppose if there was no joint in my upper arm and lower arm, what will be my position? I can do like this only. One more example I am giving you. You might have seen Latish Malinga bowling, Sri Lankan player. He bowls like this. That means there is I always say that there is no joint in his upper and forearm. He never bowls like this. He's throwing like this. As if there is no joint. That means if my hand is like this, how I will be in a position to eat? How I will be in a position to pick the things? If something, suppose this pen I am having, my pen has fallen down, I won't be in a position to. Because not only my hand is also having single bone, my backbone and my legs are also joined together, fixed joint, single bone. You cannot bend. You cannot move. That means there was necessity. ये आप करके भी देख सकते हो घर के अंदर. You keep your hand like this. अगर आप यहाँ नीचे बच्चों को flat piece of wood एक फट्टी बांध लेते हैं, उसके ऊपर पट्टी बांध लीजिए. Without joint, can you move your upper arm and lower arm? No. That is why God has gifted us with so many joints, so many types, and because of presence of these different joints, we are in a position to move our body parts differently. So, okay, coming to the hinge joint. बच्चों क्या कभी आपने ये देखा है, घर में घुसते हो, आप अपने डोर को, दरवाजे को धकेल के अंदर जाते हो? क्या कभी आपने देखा बच्चों, जो आपका डोर है, दरवाजा है घर का, वो किस पे मूव करता है? किस पे मूव करता है? अगर आप ध्यान से देखो, जो दीवार के अंदर उसे आप चौखाट बोलते हो, ठीक है, जो लकड़ी की बनी होती है, आजकल स्टील की भी बनती हैं, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? हिंजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कब्जे लगे होते हैं. 3 for this side, 3 for this side. And screws are tightened in that door. And when you push it or you pull it, either you are closing or opening the door. These hinges move like this. But do you know, your door when you are opening it, it does not go beyond a certain distance. यानी एक जगह पे जाके, जैसे आपका ये हिंज है बच्चों, ये मैं आपको ओपन कर रहा हूं आपके सामने, एंड पे आके जब इसकी ये पोजीशन होगी है, कितनी भी आप इस पे फोर्स लगाइए, हाउ मच फोर्स यू मे अप्लाई, यू कैन नॉट यानी कि गो बियॉन्ड दिस पॉइंट. सिमिलरली इन हिंज ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट एट योर एल्बो, जिसे हम कोहनी बोलते हैं, ठीक है, और योर नी, जिसे हम घुटना कहते हैं. ओके, एंड मोर ओवर इन दिस ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, डायरेक्शन इज इन वन डायरेक्शनल ज्वाइंट है बच्चों. ये इट अलाउ मूवमेंट्स आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड. जैसे आपका एक बच्चों हाथ है, यू कैन मूव इट लाइक दिस. इफ यू ट्राई टू गो डाउनवर्ड, अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड इट डजंट मूव. इफ यू वांट टू पुश इट, you are likely to break your bone, but it will not move downwards. In case of your leg, do it, try it. It goes backward, it does not go on the upper side. Upward, it doesn't go on the upper side. That means its movement is in one direction only. And mainly this hinge joint, it is present in where? This elbow, knee. Yes, lower jaw also.
Lowers also, there is a hinge joint here. It allows movement. आप कभी बच्चों कोशिश करना अपने नीचे वाले जबड़े को पकड़ के try to move the upper jaw in the upward direction. You won't be in a position to do that. That means upper jaw is fixed with a fixed joint to the skull bones, whereas only you can move your lower jaw with the help of hinge joint. It goes down only. ऊपर तो फिर अपर जा आ जाएगा. You can't move that. Okay. Yes. Knuckles. Knuckles क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो आपकी फ्लैंजेस हैं, अंगुलियां हैं पांव की, आप इनको ऐसे तो अंदर की साइड में मोड़ सकते हो. Try to move. Automatically you cannot, even if you press. अपने आप तो इधर मुड़ती हैं ये बैक साइड में, नहीं फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड नहीं होती है. इन वन डायरेक्शन ओनली. एंड इवन इफ यू वांट टू प्रेस इट और पुश इट विद हार्ट, योर फोर्स क्या होगा बच्चों? यू आर लाइकली टू ब्रेक योर बोन. यू आर लाइकली टू ब्रेक योर बोन. दैट मीन्स हिंज जॉइंट allows movement in one direction only, forward or backward. And where it is present? Elbow, knee, lower jaw, knuckles, fingers के अंदर. Okay. Now ball and socket joint. Yes. Ball and socket joint. And I will like to explain you the hinge joint also. Hinge joint बच्चों ये क्या है? इसके अंदर जब ये joint होता है, when the bone goes like this, जब वो दूसरी बोन, when it rests over here, it cannot go beyond this particular point as like this hinge. जैसे आपका ये bend होता है, it cannot go beyond this point like this. जब दूसरी बोन इस पे आके वो रेस्ट करेगी, it cannot go beyond that. And this ball and socket joint, I am having bones of that leg. This is what? Femur, tibia and fibula. Tibia and fibula, and these are the bones of that tarsals, metatarsal and phalanges. Okay? Here, it is a ball-like structure is there at the top end of what? Femur. Top end of femur. And in case of your hands, आपके हाथों में, arms में क्या है? Top end is of the what? Humerus. उसमें क्या होगी? एक ball होगी. This ball fits into a what? Socket. एक गड्ढा होता है शोल्डर, स्कैपुला में जो आपका शोल्डर ब्लेड है, एंड अगेन हेयर इन द हिप्स एरिया. सो बच्चों कैसे, अगर आपने कोई बॉल देखी है, इफ यू हैव सीन द बॉल कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. दैट इज व्हाई you are in a position to, when a bowler is bowling in a cricket, he can move like this. That means free movement is allowed. In a ball and socket joint, free movement is allowed in almost all the directions. But again, restricted to some extent, okay, because other bones may pose some hindrance there. But almost free movement in all directions. That is the ball and socket joint, and mainly it is present in the what? Shoulder area and the hip area. Okay, shoulder and pelvic, hip area. Then comes the pivot joint. Pivot joint बच्चों mainly क्या? Your skull, when it is joined to here, the skull bones, the 22 plates bones and all that, they joint with that vertebral column. अब क्या है बच्चों वहां पे? जैसे मैंने स्टार्टिंग पे इस चैप्टर की क्या कहा था आपको, यू नोड योर हेड, यस एंड नो. डोंट यू फील दैट योर स्कल इज मूविंग अराउंड ए एक्सिस? एक सर्टिकुलर फिक्स पॉइंट सा है, सिलेंड्रिकल एक कोई बोन है, वो आपने बच्चों को देखा होगा. इफ यू गो हैपन टू विजिट ए गवर्नमेंट ऑफिस, उनके जो सुपरिटेंडेंट बड़े अफसर होते हैं ना, उनके टेबल के ऊपर एक पेन स्टैंड पड़ा होता है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का. वो एक सॉकेट्स के अंदर वो इधर मूव कर सकता है या
ऊपर नीचे मूव कर सकता है. Nowhere else. Like that. So, in our, the joint in between our skull and the neck, it is a pivot joint. Upward, downward and sideways. This allows movement in the, like this. Sideways, up, down, up, down. That is a pivot joint. Yes. At elbow also, when you move like this, sideways. This is moving sideways. Okay. Then come this fixed joint. Yes. Fixed joints means they are so tightly packed and fixed. You cannot move apart the bone. The definition itself says a place where two or more bone meet in the skeleton is called as is known as a what? Joint. Is known as a joint. तो कहने का मतलब क्या है? In your skull, in your hip, pelvic girdle, the number of bones, skull 22 bony plates, when they are joined together, though we cannot separate them, but when two or more than two bones meet, we will call it a joint. So the name given to these joint is fixed joint. Reason being, you cannot move apart. There is no movement present at all at the point of fixed joint. At the point of fixed joints. Yes. One more joint. I also told you day before yesterday. Wrist. क्या है बच्चों? You see, wrist bone जो है वो क्या कर सकती है? स्लाइड पास कर सकती हैं. जब हम नीचे करते हैं तो नीचे वाली एक दूसरे के ऊपर वो खिसक जाती हैं. जब ऐसे करते हैं तो ऊपर वाले रिस्ट की जो एक कार्पल्स है, they slide over each other. The joint present in the wrist is gliding joint. Is the gliding joint. Yes, ankle पे भी आपके है, but movement is not much. Movement is not much. And one thing more I want to tell you about your foot also. ये जो आपका बच्चों foot bones हैं, ये जो आपके tarsals and metatarsals हैं, when they take a shape, arc बनती है बच्चों उसके अंदर. They take a shape of arc and try to resist the pressure of your body. और जिन क्या है बच्चों, जिन लोगों में, जिन ह्यूमन बींग्स में ये आर्क नहीं होती. आपने देखा होगा जब आप स्पोर्ट शूज डालते हो या अच्छी क्वालिटी के शूज डालते हो, उसके अंदर आपके इनसाइड, आउटसाइड नहीं, इनसाइड जो लेफ्ट साइड होती है आपकी शू की लेफ्ट साइड होती है, वहां से थोड़ा सा वो कर्व होता है अकॉर्डिंग टू, सो दैट इट शुड प्रॉपरली फिट इन योर फुट. देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन यू वॉक. तो जिन बच्चों के जिनके लोगों के, जिन ह्यूमन बींग्स के आर्क नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लैट फुटेड. क्या बोलते हैं? फ्लैट फुटेड. और उनको क्या है, डॉक्टर एडवाइज टू यूज द, उनको क्या बोलते हैं? प्लीज यूज आर्टिफिशियल आर्क. आजकल वो यानी कि सिलिकॉन टाइप बनी मिल जाती है बच्चों मार्केट में. यू यूज, तो आप उसमें क्या है, वो जो दैट आर्क वो क्या है, आपको प्रोटेक्ट करती है. वो आपके जो बॉडी वेट है उसको प्रॉपरली रजिस्ट करती है व्हेन यू वॉक. इस आर्क इज अ मस्ट. फ्लैट फुटेड इज ए प्रॉब्लम. इज ए प्रॉब्लम. एनी हाउ, बात करते करते मेरे दिमाग में आ गया. आई वांटेड टू टेल यू आल्सो. शायद आपको बुक में नहीं मिले या ना मिले. नाउ ओके, हिंज जॉइंट in one direction, forward or ball and socket joint, movement in all direction, shoulder and hip pelvic girdle, pivot joint over this head, skull and neck. Okay, movement of a cylindrical bone over axis and all that. Then it is also present here in what? Elbow. Fixed joint, आपके pelvic girdle area and the skull. Then comes this gliding. Yes, in the wrist bone there are joints. There are joints which permits sliding over of the bone. They are also present in the ankle area. आपके जो टखना है उसमें भी होते हैं.
but not there is no much movement in case of your ankle or your foot, you can say. But in hand wrist, movement is quite great. ये जो कहते हैं ना कलाइयों के द्वारा, ये जो आपके स्पिन बॉलिंग करते हैं क्रिकेट के अंदर, ठीक है. एंड इफ यू रिमेंबर, आपने शायद नाम नहीं सुना हो, मोहम्मद अजरुद्दीन, ही वॉज ए प्लेयर ऑफ रिस्ट, यानी कि आपको कलाइयों से वो बैट को एंगल देके खेला करता था. एंड वन मोर ऑफ माई एज में तो माई इरा, व्हेन आई वॉज ए क्वाइट यंग मैन, मुंडप्पा विश्वनाथ, ही वॉज ए वेरी हैंडसम प्लेयर में, ही वॉज वेरी गुड क्रिकेटर, एज लाइक गावस्कर के इरा के थे. ही वॉज ऑल्सो ए रिस्ट प्लेयर, यानी वो कलाइयों को ट्विस्ट करके कलाइयों के साथ मोहम्मद अजरुद्दीन एंड मुंडप्पा विश्वनाथ, GR विश्वनाथ. ओके, सो रिस्ट having gliding joints. Now coming to, now we have studied presence of bones, skull, rib cage, backbone, shoulder bones, hip bones, hand, foot bones, all that. Presence of joints, different joints, aligned different type of movement. Now, how these movements take place? How these movement takes place? ये तो मैंने बच्चों आपको बता दिया that at the joints bones are hanging with the help of ligaments and muscles are attached to the bones with the help of tendons, okay, but how there is a movement in the joints also. Just this takes place with the help of these movements in the bone or at the point of joints takes place with the help of muscles. So what is a muscle? Question arises. What is a muscle? अगर muscles help करते हैं movement of bones का या movement of joints का, then what is a muscle itself? A muscle is what? A muscle is a fibrous tissue which can contract when asked to do so by the brain. कहने का मतलब मसल्स एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू है, मसल एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सिकुड़ सकता है, छोटा हो सकता है. when asked to do so, जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है, किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा. जब आपका ब्रेन उसे कमांड देता है, ओके नाउ यू कॉन्ट्रैक्ट, बट वन थिंग इज देयर, इट इज अ वन वे ट्रैफिक. Muscles have the power to contract at the command of what? At the command of brain. But they cannot relax. Brain cannot give them demand. Now you relax, बाबा. पहले छोटे हुए थे, अब बड़े हो जाओ. No. तो हमें क्या है बच्चों? We require two types of muscles. क्या होगा? एक अगर वो अपर साइड में हो और एक लोअर साइड में हो. जब इनको ब्रेन कमांड करे कि भाई आप सिकुड़ो, अब इसको बोले ये फैल गए, अब आप सिकुड़ो, कॉन्ट्रैक्ट करो, क्या? तो यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. दे आर नोन एज व्हाट? बाइसेप्स मसल्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स. ट्राइसेप्स आई हैव शोन इन पिंक कलर, बाइसेप्स आई हैव शोन इन बाइसेप्स अपर वाले. लोअर वाले जो मसल्स हैं, ये जो जॉइंट एरिया है, यहां वो लीगामेंट से ये लटक रही है वो दोनों बोन्स, इसके ऊपर ये जो मसल्स हैं हमारे, ये जो बाइसेप्स मसल्स हैं, ट्राइसेप्स मसल्स हैं, दे आर अटैच्ड टू द बोन्स हियर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ टेंडन. अब क्या है बच्चों? नाउ व्हेन वी हैव टू मूव आवर हैंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आवर ब्रेन गिव्स कमांड to these biceps muscles to contract. जब ये मसल्स बच्चों क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली आप घर में करके देखना, दबा के इनको पकड़ के छोटे करना, क्या होगा? योर हैंड विल कम अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ सिंस दीज बाइसेप्स मसल्स कैन नॉट रिलैक्स एट देयर ओन, ब्रेन कैन नॉट गिव देम डिमांड. नाउ ब्रेन गिव्स डिमांड टू दीज ट्राइसेप्स मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. Your hands again straightens.
So what I want to say you is, what I want to tell you is that muscles always act in pair, not individual. And when they act in pair, then and only then there is movement at the joints. There is a movement at the joints. Okay. So I have tried to explain in pair muscles, the fibrous tissue which can contact when asked to do so by the brain. So it can shorten itself. Okay. Again, muscles contraction move bones at joint. At joint. So I think अब बेंडिंग में क्या है बच्चों, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब स्ट्रेटनिंग होती है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेप ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सीधी हो जाती है. बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो विद दिस आई थिंक टाइम इज आल्सो नॉट परमिटिंग मी. टुडे वी विल कंटिन्यू एंड ट्राई टू फिनिश. एक दो छोटी छोटी बातें लगी. यस, मूवमेंट इन एनिमल्स. फिश कैसे मूव करती है, कॉकरोच कैसे चलता है, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, वी विल ट्राई टू फिनिश in one lecture. Okay, thank you. Enjoy your study.